सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ईद, तो अभी मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पे पीछे मेरी क्यूटी सी पीहू बैठी है जो मुझे गाइड कर रही है कि दीदी अच्छा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो मैं वही उसी को देख रही हूँ। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द मेकअप ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट आई विल बी अप्लाइंग वैसलीन ऑन माई लिप्स, देन आई विल बी यूजिंग पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर। देखिए गाइस, ये खत्म होने आ चुका है पूरा, मैंने मंगवाया है नायका से, जिसका मैं अनबॉक्सिंग नायका का सब करने वाली हूँ। वो भी आपको ब्लॉग देखने मिलेगा, वो भी वीडियो आएगा। तक के लिए इसी से काम चलवा लेते हैं, जितना है एक्चुअली इसको खत्म कर देते हैं। So now I'll be using Swiss Beauty का primer, oil free long lasting base. So I'll be using this. Help me, color. So yes guys, मैंने अपना ब्रेक एंड प्राइम कर लिया है, मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था एंड प्राइमर भी यूज कर लिया है। Now I am going to use foundation. So I'll be using this Maybelline matte poreless only because I love this foundation. I totally love this. I usually wear in office also. So yes, I'll be using this. So I'll take 2 pumps of this and I'll be using Elegant Pro Coverage HD foundation in the shade tan. So yes, this is little dark for me. This is orange shade. So I'll mix with this Maybelline Fit Me 238, which is also not my shade. But still ले लिया है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ ये डार्कर शेड के साथ। So इसका भी मैं अभी ये भी इतना यूज़ कर लिया कि ख़त्म होने आया है इसका भी। ठीक है, तो I'll mix both of this. ठीक है, so I'll apply it here. अपने अच्छे से नेक फेस एंड ईयर्स को कवर कर लीजिएगा। सो कवर योर फेस, नेक एंड ईयर्स प्रॉपर्ली सो दैट कोई डिस्कलरेशन ना लगे। सो यस गाइज, मैंने अपना फाउंडेशन भी लगा लिया है। नाउ अभी मैं जाऊँगी प्राइम कंसील करने के लिए। सो आई विल बी यूजिंग दिस इनसाइड का एचडी कंसीलर। आई यूज दिस ब्लेंडर टू ब्लेंड माई कंसीलर। So guys, I've applied my concealer also and I think ये अच्छे से blend हो चुका है। Then I'll be using some MAC का loose powder to bake it. Then I'll be dusting off this because I'm not liking it much powder, so I'll dust it. इसको मैंने सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए ही बेक किया था, तो मुझे इतना ही ठीक है, ज़्यादा बेक करना मुझे नहीं पसंद है। So I'll be using this Glad Sheen का makeup eyebrow palette. So I'll be using this. So first I'll use this shade. बंद करना आवाज आ रही है। So for the lid I'll be using some light color. I'll be using this color. Yes, I've applied my eyeshadow here. Now I'll be applying some shimmer. So I'm thinking to apply this shimmer. So yes guys, as you can see,
I have applied my shimmer also to shape my eyebrows, so I'll just use my brush to just comb it. Yeah, so it's done. Now using Lakme eyeliner. So yes, I've applied eyeliner also. Now I will use this Maybelline Hypercurl Waterproof Mascara. So it's time for some blush. So what should I use for blush? I think it is looking quite bright here, but actually it is not this bright. So I'll be using one of this color. So I'll be applying this shade for my blusher. So I've already applied blusher. मुझे तो फिलहाल लाइट लग रहा है. So guys, please comment down and let me know कि ये ब्लश बहुत ज़्यादा लग रहा है या ठीक है. So पाउडर से भी थोड़ा सा कवर कर लूँगी. So I'm using this Maybelline Fit Me Compact powder. So I am thinking to use this lip color. This is so yes guys, I have applied lipstick also. I don't use bronzer because I have some acne. So after using bronzer वो ज़्यादा visible हो जाता है. वैसे भी visible है, but फिर भी I don't use bronzer on myself. So yeah guys, so yeah, one more thing we forgot, highlighter. So highlighter, for highlighter I'm using this color. So इसी हाइलाइटर को मैंने लिया है अपने इनर आई कॉर्नर पे अप्लाई करने के लिए. मुझे पहले अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे. Yes guys, this is my final look. So highlighter से look complete भी हो गया. I don't know यहाँ का highlighter is not visible. Why it is not visible? But I'm able to see here, like it is visible in the mirror to me, but I don't know why it is not visible here. I think lighting का issue है कुछ, because इधर पे highlighter आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे properly easily visible है, यहाँ पे visible नहीं हो रहा है वो. I don't think so. I think अभी आपको visible होगा. So yeah, that's it guys. This is my final look. So I'll be meeting after some time after hairstyling and after draping with patta. So bye bye guys. So this is my final look. So I have like kept my hair. So I have kept my hairstyle little simple because मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा मतलब टैंगल्ड हो गए थे और मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी पहले ही. सो आई थॉट कि जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा पिन अप कर लेती हूँ एंड ऐसे ओपन हेयर्स कर दूँगी बिकॉज आई वाज टू टायर्ड एंड आई एम वेरी स्लीपी एंड आई हैव कोल्ड ऑल्सो. So I'm not able to speak and all. This is my final look and kindly comment down कि आपको ये look कैसा लगा, and if you liked my video and if you liked my makeup and if you liked my tutorial, then please do hit the like button and please subscribe to my channel. So let's meet tomorrow or let's meet in the next vlog where I would share, I think, Eid Basi Eid का makeup tutorial. So guys, if you guys want to know the makeup tutorial of the Eid Day 2, then please comment it down. Yes guys, now it's time for bye bye, take care. Now it's time for me to stop this video because बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम चला गया इसमें. So guys, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए bye bye, take care.